Yeah, very good morning students. Now students will continue our topic, subject history, chapter 3, getting to growing food. Okay, this topic I have already discussed with you in previous video, and I told you what is the meaning of gathering and how we will just convert from the gatherers to growing food. Means to say growing food, food कौन grow करता है? It is called a farmers. So how we convert from the hunter gatherers to farmers, means to say farming we have. Okay, and the topic is, this is the second topic of that. Topic is living and dying in Meherta. Okay, well, first of all, before starting this topic, I'll just give a one quick review of previous schedule. So in that previous video, I have taught you about how that these people changed their life from gatherers to growing one. Okay, you know that before 12,000 years ago, there is a drastic change in our environment, and the environment became hot. Due to this, that grasslands grown up, and when the grassland grown, some natural crops like rice, wheat, barley grow, and by eating this, that early people just came to know that this is a very easy way to feed themselves. Okay, after that they just start recognize that these seeds are edible or not. After that they have started to grow up. ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, इन सीड्स को खुद उनकी फार्मिंग करनी शुरू करी. They have started farming. Okay, first of all they have to sow the feed, then they have to water it, and after it they have to weeding out the weeding also. ठीक है, so this when they start sowing the seeds, that crops also need a great care of them. Okay, when they have to put a great care for these seeds, they have to start living at a one place. है ना, देखो, they have to protect their crops from the animals and bird. Yes or no? ठीक है, जब क्रॉप्स बनती हैं सीड से तो क्या होता है, एनिमल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होती हैं जो उनको स्पॉइल कर सकती हैं. दैट्स वाई दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स. फॉर ऑल दिस थिंग्स they have to stay on one particular place, so they will look after their crops and they could do a farming. That's why that permanent settlement that time had been started. So in this way the permanent settlement had been started. Okay student, and the beginning of farming and herding I told you. Then they have to start domestication. They started domestication of some jungle animals which were not so wild as a cow, sheep, goat. Yes, and they were the companion also, and they protect their crops from the other wild animals. So in this way they become a herders and they become a farmers. Okay students, now we will go for a new way of life. When we came to know how we'll just cultivate these crops, and these crops are very easy way to feed them, students, they start growing them. Okay, and in this way gradually so many changes would be happen in their life, but these changes took place thousands of years. It doesn't mean कि एक जनरेशन तो उनकी हंटर गैदरर्स थी और दूसरी जनरेशन क्या हो गई, उनकी फार्मर्स हो गई. This changes took place thousands of years for become the gatherers to farmers and herders. Okay, and when they start farming, and then they were getting the crops, the seeds, they got the seeds. तो ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ ही सीड्स ग्रो होती है या हमें कुछ बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सीड्स मिलेंगी या वीट मिलेगा. तो हाउ दे विल नाउ स्टार्ट स्टोरिंग द सीड्स ऑल्सो. दे स्टार्ट टू मेकिंग अ क्ले पॉट्स, दे स्टार्ट मेकिंग अ डग पिट्स. ऑल दिस थिंग्स आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस वीडियो. Okay, now we'll continue our topic
living and dying. As I told you in the last topic also, students, that people start making the duck pits, clay pots, and teaching how to also we found some places. So we have already talked about the one side that we have got in Kashmir. Okay, this is a Burj home. The side we have already discussed, Burj home of Kashmir in last one. Now we will talk about the Mehergarh. Mehergarh is a very fertile plain near Bolan Pass. Okay, and now you will ask that where is that Bolan Pass? Okay, Bolan Pass is a route of Iran. This I will always show in your PPT and your map I will show this. Okay, so Mehergarh is a fertile. Fertile means क्या होता है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ जगह होती है, जमीन होती है, that is a called fertile. So Mehergarh is a fertile plain near the Bolan Pass, and it is on the route of Iran. This is one of the site of earliest village. ये सबसे पुरानी site है जिसकी बहुत earliest village की है. Okay, people involved in farming and herding cattle. यहाँ जो लोग हुआ करते थे students, they involved means they used to do farming and herding cattle. They domesticated the cattle. Okay, square and rectangular houses with room. On this site, we like archaeologists found that square and rectangular houses. You know that rectangular houses, in this way, the construction of the houses were there. Okay, on that side, that is a square and the rectangular houses with rooms. We found there. Okay, rural sites means to say students, जहाँ लोगों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, that is called a burial. Bury, you know that. Burial sites found here, and people paid respect to them. On this side of Mehergarh students, we found the burial sites also, where they start burying the dead people, and they paid respect of these dead people also, and they had a belief in some kind of a life after the death. वो लोग मानते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट पे करते थे जो लोग मर जाते थे उनको. एंड वन पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स. ठीक है, इवन वन बरीड जो है वहाँ जो किसी एक पर्सन की जो को दफनाया गया, किसी भी इंसान को दफनाया गया, वो गोट्स के साथ उसके साथ गोट्स पे दफनाई गई है कि मरने के बाद उसको इस सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. वी फाउंड सो मेनी आर्टिकल्स फ्रॉम देयर, एंड बिकॉज दे हैड अ बिलीव दैट द सम काइंड ऑफ अ डिफरेंट लाइफ आफ्टर द डेथ. ठीक है, सो उनको ये था कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है. दैट्स वाई वो क्या करते थे, जो भी बहुत यूज़फुल चीज़ें हुआ करती थी उस समय की, वो उन लोगों के साथ वहाँ उसको बरीड करते थे. जैसे गोट्स हो गई, दे जस्ट बरीड सम क्रॉप्स, सीड्स ऑल्सो, फूड आइटम ऑल्सो, सम जो भी उसकी चीज़ ज़रूरत का सामान हुआ करता था वो उसको वहाँ उसके पर्सन के साथ बरीड करते थे. Okay, so this is a site of Mehergarh that we have talked. It is a very fertile, बहुत ज़्यादा fertile plain area है where they used to do a farming. और फार्मिंग होने की वजह से they start making a permanent settlement over there. ठीक है, तो उन्होंने इसी वजह से वहाँ रहना शुरू करा और वहाँ घर बनाने शुरू करे. अब जब वहाँ रह रहे हैं और घर बना रहे हैं तो डेफिनेटली पीपल डेड ऑल्सो, है ना, विल बी डेड ओवर देयर. सो दे हैव टू बरी दिस पीपल एंड दे हैव अ मेड बरियल साइट्स ओवर देयर. जैसे हम लोगों के यहाँ चर्च यार्ड होते हैं, ठीक है, ग्रेव यार्ड्स होते हैं. सो इन सेम वे दे मेक अ बरियल साइट्स ओवर देयर ऑल्सो. ठीक है, सो इन दिस वे दैट Mehergarh is clear to you all. Okay. Yes, student, we are talking about the Mehergarh. That Mehergarh is a very fertile plain and it's a Neolithic site. Okay, it is near Bolan Pass, and Bolan Pass, this is a Bolan Pass, and it is in Iran. Okay, this is on a route of Iran. यहाँ you can see it here where is my cursor. Okay, this is a Mehergarh. It is Indus. Okay, this river is Indus, and it is a Bolan Pass that is in Iran. Okay, so as I told you, that is a very fertile plain site. Okay, you can see that I have
द स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप ऑफ अ हाउसेज विद रूम्स। यहाँ कैसे हाउसेज मिले हैं, रेक्टेंगुलर शेप के और स्क्वायर शेप के विद रूम्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड बाय दिस साइड वी कम टू नो दैट this is the earliest village site, student, and people were involved in farming and herding also. So you can see these are the some pics of their houses, that is a shape in square and rectangles. Okay, one pic I here, this is a burial site, bari side है ना, bari आपको पता है ना, when we just buried anybody as after their death, so that is called a burial sites. ठीक है, तो जो जहाँ लोग रहते हैं वहाँ बरियल साइट्स भी होंगी, लोग मरते भी हैं, एंड वी हैव टू बरीड टू देम ऑल्सो, है ना। सो यू कैन सी दैट इन दिस पिक्स, देखो आई जस्ट शो यू देयर बिट दीज सम, दे आर जस्ट केप्ट सम वेरी इनिशियल थिंग्स विद दैम बिकॉज दे हैव अ थॉट कि देर इज़ अ लाइफ आफ्टर द दैट। ठीक है, तो वो देखो यहाँ देर इज़ अ वन क्ले पॉट हेयर, मीन्स टू से यहाँ उसके खाने पीने का कुछ सामान रखा है। ठीक है, मतलब जो भी उससे रिलेटेड किसी भी, जब किसी पर्सन डेड, तो देन दे डिग द थिंग्स फॉर फूड, फॉर इवन देर इज अ वन साइड दे हैव बरीड विद द गोट्स ऑल्सो, ये देखो है ना। सो यू कैन सी दैट, तो उनको उसके साथ दफनाया जाता था, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ बरियल साइट्स। ठीक है, दिस इज इट इज अ डग पिट। आई टोल्ड यू दे यूज टू स्टार्ट अ डग पिट फॉर स्टोरिंग द फूड्स, इवन दिस इज अ दे कुड यूज एज अ हाउस ऑल्सो। ओके, सी दिस, इट इज विजिबल टू यू, दिस इज अ किचन हार्थ, yes. So in this way we come to know that they have a belief that there might be some kind of a life after the death also. Okay, and they paid a very great respect to deads. देखो यहाँ, this is a skeleton of any person, people, and these are the goats and something skeleton is there which were buried with him. Okay, so all this evidence we have found from the Mehergarh side. Okay, and this is a Mehergarh. You can see this is a map of India, and it is a Iran. This is a Mehergarh side. Okay, so we have found all this from the Mehergarh side. See, this is a one clay toy. Okay, तो जो लोग जिस तरीके से उस समय के उनके पास जो चीज़ें हुआ करती थी, उन्हीं की वो पिक्चर्स बनाते थे, या पॉट्स बनाते थे, पेंटिंग्स करते थे, है ना, टॉयज बनाते थे, क्ले टॉयज बनाते थे। ठीक है, देखो दिस इज अ क्ले पॉट, यस, दे यूज इट फॉर स्टोरिंग द फूड, आई टोल्ड यू, है। एंड दिस इज द अर्लीस्ट विलेज, सबसे पुराना विलेज साइट है ये मेहरगढ़। ओके, and this is a Neolithic site. Why we have called it a Neolithic? Neolithic means stone. This is the third last stage of the stone tools. After that we start with the prehistory and then history. So in this Neolithic site we got a more advanced and modern tool with the sharp edges, है ना। So this is, I have shown you the Mehergarh site. This is India and it is Burjhom. I have shown you Burjhom in last previous video also, student. It is in Kashmir. This site it is in Kashmir, Burjhom. Okay, see, these are all the name of the site. Hallor, Piyampalli, डाउजोला हेडी, ये भी हम अभी कर रहे हैं। डाउजोला हेडी के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, दैट इज ऑल द, इट इज इन चाइना, ब्रह्मपुत्र वैली, यहाँ क्या है, ब्रह्मपुत्र वैली है। सो जो डाउजोला हेडी है दैट इज इन नियर टू ब्रह्मपुत्र वैली। ओके स्टूडेंट्स, एंड स्टोन टूल्स फाउंड इंडिकेटिंग द मोटर्स पिस्टल्स इंडिकेटिंग फार्मिंग। ओके, यहाँ से इस
डायोजोला हेडी से जो हमें मोटर्स पिस्टल्स जो हमें मिले हैं वो हमें किस चीज़ का इंडिकेट करते हैं कि ये जो है उस समय फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी, लोग पीपल दे स्टार्टेड फार्मिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई शो यू मोर पिक्स अबाउट द डायोजोला हेडी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इन एल्सेवियर we will talk about the डायोजोला हेडी। Okay, these are very important topics student, you have to go through by these videos, watch these videos because these are very important videos. So now in Alsace we will talk about the Dawogola Valley. On hills near the Brahmaputra Valley, this site we found on the hills of near Brahmaputra Valley in China. Okay, Dawogola Valley is the site where it is near to the Brahmaputra Valley and in China. Stone tools found here including the mortars and pestles indicating farming. Okay, as I told you that in the later age they had started the Neolithic stones. So stone tools, on this side we found the stone tools जिसमें क्या इंक्लूड था, मोटर्स पिस्टल्स। आई हैव शोन अ पिक्स ऑफ मोटर्स और पिस्टल इन लास्ट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, तो मोटर्स पिस्टल्स भी यहाँ पर उन्होंने मिली है और इससे पता चलता है कि वो लोग फार्मिंग किया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, देयर इज वन स्पेशल स्टोन, jadeite stone. Okay, which stone is this? Jadeite. This is a small word student that you have to remember because I will make up questions and these questions will come in your exams. Okay, so you have to be very careful while you watch the video or read the chapter. Okay, these jadeite stone found that many have been bought from China. Okay, अब ये जो stones हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें? चाइना में मिलते हैं। तो definitely they bought from China to Dawogola Valley, ये चाइना से लाए गए हैं। ठीक है, tools made of Asian wood, pottery also found. अब वहाँ जो टूल्स बने हुए हैं, दिस इज फॉर एशियन वुड। एशियन वुड मीन्स पुरानी लकड़ी, जो बहुत पुरानी लकड़ी होती है, एशियन वुड से बने हुए हैं। these tools were made of Asian wood. Okay, and pottery, you know what is the meaning of pottery? Pottery means होता है मिट्टी के बर्तन। Okay, that pottery also found here. Okay students, so all these pics I will show you in your video. Right. Now we'll talk about the Kettle Dam. Kettle Dam is one of the famous Neolithic site in Turkey. This is a Neolithic. Why I am using the word Neolithic? Because in that time, from this side we have got the stone tools of Neolithic site. Okay, so this is a Kettle here. It's a very famous Neolithic site in Turkey. Okay students, many things were bought here from great distance. अब इस साइड से हमें पता चलता है कि there are so many things they had to brought from the great distance. मीन्स बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है इस साइड में बनाई गई हैं वो बहुत दूर दूर से लाई गई। How we come to know these things? Flint. You know what is the meaning of flint? I will show you that picture also. That is a flint from Syria. जो flint है वो कहाँ से लाया गया है? That is from Syria. It brought from Syria. Caudies, you know, caudies देखिए आप लोगों ने, that is from the Red Sea. Obvious सी बात है, we got all these caudies from sea. So these caudies will got from the Red Sea. Shells, you know, shell seeds. Okay, these shells and caudies. Shells got from Mediterranean Sea. अब shells कहाँ से लेकर आए गए हैं? Mediterranean Sea से। All this would have been carried on the animals' back as there are no carts by them. Okay, अब see students, nowadays तो it's very easy. Your life is very easy if we have to carry one thing from one place to another place. We are having a very good transportation, road system. Okay, very fast technologies we have. अगर हमें अब कुछ यहाँ से या वहाँ भेजना होता है तो we can send a parcel also. ठीक है, उससे पहले क्या होता था स्टूडेंट, जब हमें कोई सामान इधर से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता था तो वी यूज कार्ट. कार्ट मीन्स बुलक कार्ट, काउ कार्ट, हॉर्स कार्ट. सो हम इस टाइम से पहले जो टाइम था, अर्लियर टाइम था, वी यूज द कार्ट्स. बट बिफोर दैट टाइम, ओके, देयर इज नो कार्ट्स एट ऑल. सो
what we use for bringing the things from one place to another place? We use animals. Okay, so in this way all these things अब इतना easy नहीं था स्टूडेंट्स उस समय कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना या वहाँ से चीज़ को मंगवाना, है ना? तो it took lot of time because you know that there was no road system, totally forest over there, very wild animals over there. Okay, so that time was very different from this present time, and even we cannot think, हम सोच भी नहीं सकते कि लोगों को कितना टफ टाइम और कितनी टफ सिचुएशन से निकलना पड़ता था. ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लिंट. सो फ्लिंट कहाँ का फेमस, कहाँ से मिला? दैट इज़ फ्रॉम सीरिया. ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटल हब दैट इज इन टर्की. अब टर्की से यू कैन सी नाउ टेक अ मैप एंड जस्ट चेक द डिस्टेंस फ्रॉम टर्की टू सीरिया. ओके, टर्की से सीरिया का डिस्टेंस मेजर करो, देन यू विल कम टू नो हाउ इट्स डिफिकल्ट टू ब्रॉड समथिंग फ्रॉम सीरिया टू टर्की. जस्ट गो थ्रू बाय द रेड सी एंड देन थिंक कि हाउ दे कैरीड द बॉडीज फ्रॉम रेड सी टू टर्की, देन Mediterranean Sea. So there are so many their life was very difficult, students. This time our life is very easy, but their life is very difficult. Okay, so they used to bought anything from one place to another place. They used to the animals because they don't have any transportation. Okay, so in this way I just made you understand in this video how these early humans convert from gatherers to farmers. You can say gatherers to farmers. Okay, so hope so do you understand all these things. If you are having any query, you can send to me in your class WhatsApp. Student, I just came to know there are some chapters are changed in some books. There are some chapters headings are changed in some books. So whatever I am giving the heading and I am giving your chapter names, so please go through by that चैप्टर्स ओनली. ठीक है, हो सकता है आपकी नई एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें कुछ और चैप्टर हो, क्वेश्चन चैप्टर 3 का. जैसे अभी मेरे पास एक बुक है, दिस इज अ न्यू बुक ऑफ एनसीईआरटी एंड चैप्टर 3 इज देयर इन द अर्लिएस्ट सिटीज एंड दैट इज द 4th chapter which I will go to teach. Okay, so don't be so confused. Whatever the chapters I am giving you in your class, you have to go through by that chapters only. Okay, students. So tomorrow is your Zoom class according to your new schedule, and be ready with your books and read the chapter properly. Okay, students. Have a nice day. Stay safe. Stay healthy. Now, see, student, we'll talk about the Daujola heading. Okay, Daujola heading is on the it's near to the hills near the Brahmaputra valley. ठीक है, ये कहाँ पर है? हमारे हिल्स पर है और ब्रह्मपुत्र वैली के पास है. ओके, दिस इज ऑल्सो अ अर्लिएस्ट साइट. ओके, नाउ विल सी व्हाट वी हैव फाउंड फ्रॉम हेयर. यहाँ इस साइड से हमें क्या क्या मिला है, विल जस्ट सी. ओके, फ्रॉम दिस Daujola heading विल फाउंड दिस मोटर एंड पिस्टल्स. मोटर एंड पिस्टल आई टोल्ड यू ना, ये देखो सिलबट्टा जिसे हिंदी में कहते हो. कूटनी देखिए, अब घर में मम्मी यूज़ करती हैं, दैट इज मूसल एंड द कूटनी इज देयर. ओके, दैट इज कॉल्ड अ मोटर एंड पिस्टल्स. ओके, दिस वी फाउंड इन Daujola heading. This is a pottery, old pottery. This is also from Daujola heading. Okay, this is a one stone that is called a jadeite. Jadeite is found in China and it brought from the China here. Okay, this is a jadeite stone. You can see this is a polished one. Okay, ये जो stones हैं वो कहाँ से मिले हमें स्टूडेंट्स? We found all these stones from Daujola heading, mortar pestles and jadeite stone. What is a stone? Jadite, jadeite stone. We found many may have been bought from China. ये कहाँ से लाया गया है? चाइना से लाया गया है स्टूडेंट्स. ओके, more thing I'll show you. Okay, just a minute.
Yeah, you can see this is a wood. Okay, this ancient wood we also found from the जाउडेला हेडिंग. ये भी हमें एशियंट वुड है, बहुत पुरानी लकड़ी है जो हमें जाउडेला हेडिंग से मिली है स्टूडेंट्स. ओके, ऑल दिस वी फाउंड फ्रॉम इट. ओके, यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट एल्सवियर दैट इज कॉल्ड अ कैटलहॉक. ओके, देखो अभी मैं शो करती हूँ तुम्हें. Now we'll talk about the Catalhuac. Okay, this is a site which this is a Neolithic site, very famous Neolithic site found in Turkey. ये site कहाँ मिली है? टर्की में. This site will found in Turkey. Okay, see, and I'll show you on the map also. Okay, just a minute. Here you can see this is a Turkey here, and we found all these things from the Catalhuac. ठीक है, देखो ये इस तरीके से वहाँ पर देखो, you can see this just like a horns. ये हॉर्न्स की तरह लग रहे हैं ना, किसी कैटल के हॉर्न्स की तरह हैं. यस, है ना. सी, दिस इज अ टर्की एंड दिस साइड इज फाउंड इन टर्की. That is Catalhuac. This is a very famous Neolithic site. Okay, we have got so many things from this site, students. You can see this is the structure of the houses over there. Okay, these type of paintings we have found. See, it's very colorful. These are all made by the natural colors. Yes. They use a natural color. It was on the cave. Shells. Okay, this Catalhuac Neolithic site we found this caudies. You know, have you recognized this? We called it caudies. This caudies brought to this site from Red Sea. पहले लोग जो थे स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर से सामान लेकर आया करते थे. तो ये जो caudies हैं, these all caudies brought from Red Sea to Turkey. I'll show you the distance of Red Sea to Turkey also. This is a flint. That flint is also bought from Syria. ठीक है, this also we found from Catalhuac side, and this flint bought from the Syria. It is a stone, and after giving a shape of this stone, it becomes a flint like this. देखो, That's why it is called a Neolithic site. Neolithic site है क्योंकि देखो कितने शार्प एजेस वाले स्टोन्स यहाँ बनाए गए हैं. ठीक है, और किस स्टोन से बनाए गए? इस स्टोन से बनाए गए. दैट इज अ स्टोन. दैट इज विच स्टोन इज दैट? फ्लिंट. दैट इज अ फ्लिंट. Shells, we found the shells here on this side. Okay, and this shells brought this site from Mediterranean Sea. ये जो शेल्स मिले हैं वो कहाँ से? ये हमें कैटलहुआक से साइड से मिले हैं, बट दीज ऑल बॉट फ्रॉम द मेडिटेरियन साइड. सी, देखो, दिस इज ऑल द मैप. ओके, these are the stone tools of that Neolithic site which we have found. This pottery, देखो, this is our old pottery made by clay. See, these type of pots they use that time. ये तो jadeite stone है. Okay, this is a Red Sea. This is a map of Red Sea, students. देखो, now see, you can look at here. ठीक है, this is a Turkey. You can see at the top, and this sea is a Red Sea. Yeah, it's just moving from so many countries here. This is Russia, Jordan, Saudi Arabia, Yemen, Djibouti. There's so many things.
So that time that transportation was not very easy, students, because that people did not have a modern transportation. They used to animal for carried their things from one place to another place. Okay, mostly they used animals for carried things from one place to another place. Okay, students, so hope so. Do you like all these things? Do you like this pics and that it makes you very much clear? Yes? And students, please do study, and whatever you don't understand, please send me a query in your WhatsApp group.